नेशनल सेफ्टी काउंसिल एनएससी के छत्तीसगढ़ चैप्टर के तत्वाधान में बाल्को प्रबंधन ने औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया जो एनएससी छत्तीसगढ़ चैप्टर के सदस्य हैं। कार्यशाला के मुख्य अतिथि बाल्को के ऊर्जा अध्यक्ष श्री शिरीष रंगोले ने कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। नेशनल सेफ्टी काउंसिल एनएससी के छत्तीसगढ़ चैप्टर ने बाल्को लर्निंग सेंटर में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन बाल्को के ऊर्जा अध्यक्ष श्री शिरीष रंगोले ने किया। इस मौके पर एनएससी के चेयरमैन श्री एस.के. जैन, बाल्को के मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री शरद गोयल और औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर्यावरण एवं एल्यूमिना संयंत्र प्रमुख डॉक्टर पी.के.एन. राघवन विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छों से किया गया। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बाल्को के ऊर्जा अध्यक्ष श्री शिरीष रंगोले ने कहा कि औद्योगिक खतरों की पहचान कर दुर्घटनाओं को टालने और कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से सुरक्षा कार्यशालाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। बाल्को प्रबंधन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। As we can see, the last couple of decades, there has been vast improvements in an economy like ours. Technological improvements, attitudinal changes, as well as the way we work, the systems. Occupational health and safety is not just limited to prevent harm to the workers, the property and the environment. It goes beyond the traditional concept. In fact, long back when I started working, safety was just identifying, reducing or eliminating unsafe work and unsafe act. That's how we were brought in, not anymore. Today, occupational health and safety goes far beyond and incorporates various things like advising managements on how to increase worker productivity through raising morale and reducing equipment downtime. It analyzes work-related environments and designs programs to control, eliminate and prevent disease or injury. Occupational health and safety managers also advise management on the effectiveness of safety and health programs. In this era of knowledge and growth, gentlemen and ladies, occupational health and safety management has become more and more scientific. It incorporates identification of hazardous conditions and practices and moving on to prediction of hazards by experience, historical data, workplace analysis and other information sources. It also identifies potential hazards in systems, equipments and facilities which are planned in future by uncovering patterns in injury data and indicates a specific cause. It devises controls that need to be implemented to reduce and eliminate hazards. It also incorporates conducting training sessions for management supervisors and workers on occupational health and safety practices as well as regulations. Occupational health and safety goes a step further. It involves rehabilitation of workers after accidents and injuries and make sure that they return to work successfully. What I want to emphasize, ladies and gentlemen, is that it's not just mere safety. It's a far more complex subject. It's a far more complex domain wherein in this century we all have to work together. We have to bring in all kinds of scientific aids so that at workplaces the worker is safe, the environment is safe, the productivity is increased and hazards are eliminated.
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यकारी निदेशक श्री एस.के. जैन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और अधिकारियों में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा हमारी कार्य संस्कृति का अंग होना चाहिए। Then make you a safety auditor, MUSA. They say that if you know the safety, then there will be no pains. And if you don't follow safety, if there is no safety, then no pain. May I add that most of the people who create unsafe acts and conditions, no safety and also no pain, yet believe in no safety and no pain. Or we can say the safety is pain. Some people believe that yes, if you want to have safety, then you must pain yourself. Pain yourself means you will have to work for it. Safety will not come automatically. बाल्को के मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष शरद गोयल ने कहा कि बाल्को प्रबंधन प्रत्येक कार्य में सुरक्षा मानदंडों का पूर्णतः पालन करता है और इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। For Balco, it is a very important time because we have already done groundbreaking for 200 megawatt power plant, and we are also adding up a 6.5 lakh tons aluminum smelter, making Balco and Korba a prestigious place in the state of Chhattisgarh as a single largest aluminum smelter at single location under one umbrella. This is why I am repeating, this is the very prestigious work Balco has taken up. And also, when all the safety professionals and practitioners are here, I would like to only add here, and while we bring projects, we also need to bring prosperity with safety. So I have learned in this company that every business plan has to start, must start with a very important note called safety. The great teachers have taught us the safety of yourself and the safety of fellow men in the businesses and on the daily life is very important. This is what is the concept of the safety workshop. When we add up things, we also add one more tag in our caps called safety. बाल्को के औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर्यावरण एवं एल्यूमिना संयंत्र प्रमुख डॉक्टर पीकेएन राघवन ने अपने स्वागत भाषण में एनएससी के उद्देश्यों से बाल्को अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया। I am happy that this workshop has taken off in Korba, though there were some initial delays in organizing this workshop. We are thankful to the Chairman, National Safety Council Chhattisgarh Chapter, for having given us the honors of hosting this workshop here. Developing a strong safety culture as an integral part of the work culture and lifestyle in the people is a big challenge. Appropriate training and education is one of the several approaches to meet the challenge successfully. National Safety Council, whose mission is to create, develop and sustain awareness about safety, health and environment at the national level, has been conducting training courses ever since it was established in 1966. कार्यशाला में बीएसपी के वरिष्ठ प्रबंधक और एनएससी के सदस्य श्री के हरिशंकर ने सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। बीएसपी के उप प्रबंधक श्री पीएसवी सत्यनारायण ने विभिन्न सामग्रियों के रखरखाव में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। बाल्को के डॉक्टर राघवन ने बाल्को की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर प्रकाश डाला। कार्यशाला के अंत में बाल्को के अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाने की अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधन प्रशिक्षु सुश्री बुशरा फारूक ने किया।